अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांस्ड मटेरियल। द एडवांस्ड मटेरियल आर दोज मटेरियल विच इज़ यूज्ड इन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। वो मटेरियल जो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं उसको भी एडवांस मटेरियल कहते हैं। यूज्ड फॉर द इंजीनियरिंग पर्पसेस एडवांस्ड मटेरियल आर ऑल इन सॉलिड फॉर्म। ये हम इंजीनियरिंग पर्पस मुख्तलिफ पर्पस के लिए यूज़ कर सकता है। ये सॉलिड फॉर्म में भी हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडवांस्ड मटेरियल। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडवांस्ड मटेरियल इज़, इसके एडवांस्ड मटेरियल का प्रॉपर्टीज़ है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल करोसिव प्रॉपर्टीज़, करोजन प्रॉपर्टीज़। ये हम वन बाय वन अभी डिस्कस करेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ है ऑफ एडवांस्ड मटेरियल इन केमिस्ट्री। स्टूडेंट इसमें फर्स्ट आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडवांस्ड मटेरियल। ये अंदर दो तीन ग्रुप में भी तकसीम हुआ, सब डिवाइडेड भी है 4 ग्रुप में। पहला आता है टेंसल स्ट्रेंथ। टेंसल स्ट्रेंथ इज़ ए मेजरमेंट ऑफ फोर्स required to pull a material to the point where it break the tensile strength of a material is the maximum amount of tensile। इसे maximum amount tensile भी है। stress that can take before। example of material pressure, concrete, glass, diamond, rubber। ये हमारे पास है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एडवांस मटेरियल। इसमें भी आता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। दूसरा इसमें भी आता है फ्रैक्चर टफनेस। फ्रैक्चर टफनेस इज़ ए quantitative way of expressing of material resistance to crack propagation। इसमें तीसरा नंबर पर आता है फैटीग स्ट्रेंथ बर्दाश्त करने वाला। फैटीग स्ट्रेंथ, इट इज़ द हाईएस्ट स्ट्रेस दैट ए मटेरियल कैन withstand for a given number of cycle without breaking। चौथा नंबर इसमें भी आता है क्रिप स्ट्रेंथ। इट इज़ द डिफाइन इज़ द maximum stress in a material that will result in a specified amount of deformation in a given time at a constant temperature। 5 नंबर आता है हार्डनेस। हार्डनेस इज़ the ability of a material to resist deformation। Common example of hard matter are ceramics, concrete, certain material। दूसरा नंबर इसका प्रॉपर्टी आता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडवांस्ड मटेरियल। इसमें आता है कंडक्टिविटी। इट इज़ द मेजर ऑफ द easy at which an electrical charge can pass through a material in its inverse is known as resistivity। स्टूडेंट इसमें तीसरा प्रॉपर्टी भी आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। मैग्नेटोकेमिस्ट्री पहला इसमें भी आता है मैग्नेटिक के लिए। मैग्नेटोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। असल में ये मैग्नेटोकेमिस्ट्री में भी आता है जिसमें हम भी मैग्नेटोकेमिस्ट्री का मटेरियल भी स्टडी कर सकता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, इनऑर्गेनिक सॉलिड दैट एक्सिबिट मैग्नेटिक इफेक्ट्स अदर देन डायमैग्नेटिक, which is a properties of all the substance having some unpaired electron and their outer valence shell। जो मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर सकता है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से वो भी अट्रैक्ट कर सकता है। दूसरा प्रॉपर्टी, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन हैव बोथ स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन which together generate a magnetic moment associated with the electron। Magnet behave is thus restricted mainly to compound। स्टूडेंट्स 4 नंबर पर आता है डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़। ए डाइलेक्ट्रिक इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर
that can be polarized by R applied electrical field. When a dielectric material is placed in an electric field of electric charge do not flow through the material as they do in an electrical conductors, but only slightly shift from their average equilibrium position, causing dielectric polarization. For example, porcelain, ceramics, glass, plastic oxide of various material. इसमें अंदर जो आता है कैपेसिटर, a device for storing electrical energy consisting of two conductors in close proximity and insulator from each other. दूसरा आता है डाइलेक्ट्रिक नैनो पार्टिकल्स. ये इस डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी में अंदर आता है. डेंसली पैकेट particle with a high surface area. Nano spide dielectric oxide, while allow dielectric layers of the less than 10 micrometers. 10 micrometer can be dispersed in different material medium to impart useful characteristic to the composite polymer dielectric composite for embedded exhibit flexible dielectric films used cell phone and laptop. इसका तीसरा प्रॉपर्टी भी आता है डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ में. फेरो इलेक्ट्रिसिटी. It is a characteristic of certain material that have a spontaneous electrical polarization that can be reversed by the application of a external electric field. इसमें चौथा प्रॉपर्टी भी आता है पैरा इलेक्ट्रिसिटी is the ability of many materials, especially ceramics, to become polarized under an applied electrical field. An example of a para electrical material of high dielectric constant is strontium titanium. Application of dielectric properties. Use in capacitor. Mineral oil is used inside electrical transformer as a fluid dielectric and assist in cooling. स्टूडेंट 5 नंबर पर आता है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ आर इंक्लूड बिलो. इसमें ये प्रॉपर्टी शामिल है एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, पोलराइजेशन. एब्जॉर्प्शन it is the measure of the extent to which light is absorbed by a substance. A book material absorb maximum light. Refractive index is a measure of the bending of a ray of light when passing from one medium to another. Refractive index N is also defined as the ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of reflection is equal to N is equal to sine I divided by R. Refractive index is also equal to the velocity of light c of a given wavelength in empty space divided its velocity v as a substance और या n इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई वी. ये है डायग्राम, आप भी देख सकता है. इंटरफेस एन आई डिवाइडेड बाई एन आर, थीटा आई और क्यू पी. तीसरा प्रॉपर्टीज में भी आता है पोलराइजेशन. Polarization, the ability of material to give specific orientation to electromagnetic wave such as light wave. ये आप भी डायग्राम में देख सकता है. लाइट सोर्स है, हम भी वेव्स भी प्रोड्यूस कर सकता है. लाइट बीम भी है, अनपोलराइज्ड भी है, और पोलराइज से भी पास होता है. ये पोलराइज्ड लाइट है. स्टूडेंट 6 नंबर पर आता है केमिकल करोजन प्रॉपर्टीज़. Corrosion, decay of material by substance in a surrounding environment.
atmospheric corrosion, acid corrosion, and other chemicalism. Chemical electrochemical oxidation process metal transfer electron to environment. ठीक है, undergoes to valency change from 0 to positive valency. The atom on the metal surface or oxide damage the entire surface. Most metal are easily oxidized. They tend to lose electron to oxygen in the air or in water. Metal required a natural positive resistance to corrosion. This occurs when the material reacts with the oxygen in air. प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल, हम ये केमिकल करोजन से किस तरह भी प्रोटेक्शन भी कर सकता है. द हार्मफुल करोजन कैन बी प्रिवेंटेड इन द numerous way by shielding the material surface from O2 and moisture. A coat of paints is effective for a while, but rust is begin. To form as soon as the paint is stretched or shipped. Electrical current to produce pass film as material by electroplating with an inert passivating metals. Wear properties. तीसरा नंबर आता है wear properties, loss of material from surface, erosion, aging और friction. स्टूडेंट्स, ये आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडवांस या मटीरियल सब कुछ कंप्लीट हो गया है. ये केमिस्ट्री में भी आता है, बिल्कुल आपको इस तरह नोट्स भी मिल सकता है. सिर्फ आप इससे भी स्क्रीनशॉट ले लें और अपना नोट्स भी बनाओ, फिर से भी एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा. और सुनो, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल ईजी इस तरह नोट्स आपको भी मिल सकता है. और हमारा चैनल पर और इस तरह नोट्स भी मौजूद हैं.